be it global warming, our ecosystem. 3, 2, 1, here I go. City. Avatars successfully deployed. Okay, watch this. जी हाँ, मिलिए इन 3 अजीम लोगों से जिन्होंने दुनिया में दूर दराज इलाकों का सफ़र करके दुनिया की किस्मत बदल दी. All the plans Dubai has for next 50 years and even next 100 years. To be honest, I love this part. ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है. ये है अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अस्सबाह अल-किंदी. अल-किंदी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर की तरफ से जो होप प्रोब मिशन जो पे वो लोग अपनी बैटरीज कैसे चार्ज करेंगे. हाय, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग. और जैसा कि आपने मेरे साथ लैंड किया दुबई में, आपके फेवरेट रुपी चैलेंजेस होंगे यहाँ पे दिरहम्स में. तो पहले करते हैं हम नाश्ता और उसके बाद जाएंगे हम एक्सपो सिटी दुबई. राइट, घर से तो हमने किए करीम, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इज अ बिट एक्सपेंसिव, सो इट्स बेटर टू ट्रेवल बाय मेट्रो इफ यू आर ऑन अ बजट ट्रिप. Well, that I am. लेकिन चूंकि एक्सपो सिटी का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता अगर मैं मेट्रो से जाती, and we got a bit late due to some reasons, so we have to catch up in time. इसलिए हम कैब से जा रहे हैं, राइट? अदरवाइज दुबई की प्रॉपर वाइब आपको आती ही इसकी मेट्रो में, क्योंकि उसमें आपको मिलता है प्रॉपर एरियल व्यू. लाइक फ्रॉम टॉप यू कैन सी ऑल द बिल्डिंग्स, ऑल द एरियाज अराउंड, जो कि गाड़ी में इतना प्रॉपर नजर नहीं आता. Secondly, it's properly air conditioned, and the best part is it's pretty safe for women to travel. So by any chance, if you plan to travel through metro, let me guide you the proper station here. आप किसी भी स्टेशन से अगर मेट्रो में बैठते हैं तो you just need to check कि जबल अली से अक्सर जो है वो स्टेशन अलग हो जाता है अगर आपने कहीं और उतरना है. So make sure आपका जो रूट है वो डायरेक्टली एक्सपो सिटी तक जा रहा हो, जो कि लास्ट स्टॉप है, 76 नंबर स्टॉप है. So आप कहीं से भी मेट्रो में बैठ रहे हैं तो आई एम श्योर कि अगर वो रास्ते में कहीं और इंटरवीन नहीं हो रहा स्टॉप, तो आप लास्ट वाले स्टॉप पे एक्सपो सिटी ही उतरेंगे. बट यू मस्ट नीड टू क्रॉस चेक, राइट? चलिए जी, इतने बड़े शहर में मैं आपको ले आई हूँ जो कि एक्सपो सिटी कहलाता है. इसके अंदर काफ़ी सारे पेविलियंस हैं, जैसे आपको ये तुर्कमेनिस्तान और रशिया का पेविलियन नज़र आ रहा है सामने. अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान का भी है, बहुत सारे और कंट्रीज़ का भी है. लेकिन आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताती चलूं. बेसिकली ये पूरा सिटी इसलिए तैयार किया गया था कि यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपो होना था, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करना था. बट अनफॉर्चुनेटली वो 2020 में नहीं हो सका. दैट हैपेंड इन 2021, एन ईयर लेटर. From October 2021 to 31st March 2022, which was an historic event क्योंकि 178 countries से 24.1 million लोगों ने अटेंड किया. You must be thinking कि इतने बड़े एक्सपो का actual purpose क्या था. Let me tell you that first. If I take you back in history, so we get to know last 170 years से World Expos जो हैं वो दुनिया की तमाम greatest innovations के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहे हैं. जी हाँ, हिस्टोरिकल इनोवेशंस में से आप अगर देखें तो टेलीविजन हम सबके घरों में अचानक से खुद ही तो नहीं आ गया. It was firstly introduced through New York's World Fair in 1939, जो कि किसी भी टेलीविजन का फर्स्ट ब्रॉडकास्ट था वो वहाँ पे शोकेस किया गया था. देन इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, तो जो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, अगर जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उसकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आई रिमेंबर दैट. वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कैसे कराया गया, वो वर्ल्ड फेयर्स ही होते हैं एक्चुअली. सो जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो 1862 में लंदन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया था. इसी तरह टेलीफोन हम सबके घरों में ऐसे ही नहीं आ गया था. ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया तो वर्ल्ड्स फर्स्ट टेलीफोन वाज आल्सो शोकेस्ड एट अ वर्ल्ड फेयर इन 1876. नॉट ओनली दैट, देखिए हर चीज़ का फैशन होता है. फैशन इज़ नॉट लिंक्ड टू जस्ट क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग अप. Fashion is there in the field of technology, food, everything, right? So food inventions में अगर आप बात करें केचप की, आइसक्रीम्स की, आइसक्रीम कोन्स की, एंड इवन पॉपकॉर्न्स की, तो वो भी सारे इसी तरह वर्ल्ड एक्सपोज में इंट्रोड्यूस हुए थे. एंड अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन,
आईफिल टावर आज से 134 years ago डिजाइन किया गया था फॉर अ वर्ल्ड फेयर एंड ऑल्सो फेरिस व्हील एज अ अम्यूजमेंट राइड फर्स्ट टाइम किसी भी एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था एंड देन दे वर नॉट डिसमेंटल्ड, दे स्टेड देयर। जिस तरह लंदन में जो आइकॉनिक क्रिस्टल पैलेस है उसमें 1851 में जो ग्रेट एग्जीबिशन हुई, वहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। खैर आई वॉन्ट गो मच इन टू द डिटेल, बट मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1855 में जो वॉशिंग मशीन थी या फिर स्विंग मशीन जो है सिंगर की, दे वर इंट्रोड्यूस्ड देन इन पेरिस, राइट? So there the world adapted, and not only this, United Nations General Assembly adopted Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948 in an expo. The 8 members of the drafting committee of a bill of human rights. जितनी भी हाई लेवल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें यू कैन से स्पेस रॉकेट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉकअप्स, ये सारी जितनी भी ऑटोमेटेड मशीन्स और सारे कंप्यूटर्स, हाई लेवल टेक्नोलॉजी, ये सब इसी तरह वर्ल्ड फेयर्स में दुनिया को इंट्रोड्यूस कराई गई एंड देन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम। नाउ यू मस्ट गॉट एन आइडिया दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्सपोज, राइट? तो अगर आपको सेम डे पास भी चाहिए तो आपको प्री बुकिंग करनी होती है, इसलिए हमने घर से निकलने से पहले ही बुकिंग कर ली थी। एंड यूजुअली 1 डे पास में यू कैन विजिट 7 पेविलियंस, लेकिन हमने वो वाला पास नहीं लिया बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि हम इतने ज़्यादा पेविलियंस कवर नहीं कर सकेंगे। हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एलिफ पेविलियन है, सो हम आपको वहीं डायरेक्टली लेके जाएंगे, जिसका टिकट हमने 50 दिरहम्स में बुक किया ईच पर्सन, राइट? सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। As it's a whole pavilion visit, so अभी हम करने वाले हैं बहुत सारी informative discoveries, right? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंसान के अंदर शुरू से ही सिविलाइजेशन के आगाज से ही एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का, यहाँ तक के बहुत सारी नई चीज़ें दरियाफ्त करके बहुत सी इजादात भी वजूद में लाई गईं और उसकी ड्राइविंग फोर्स जो थी वो यही पैशन था, यही क्यूरोसिटी थी जो इंसान के अंदर थी। एंड येस, दैट लेड टू मोबिलिटी। अच्छा, अब नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट कि व्हाट मोबिलिटी इज़, सो लेट मी टेल यू। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि इस पेविलियन का जो पूरा नाम है वो मोबिलिटी पेविलियन क्यों रखा गया है। एज यू नो कि हम शदीद गर्मी में आए हैं, आई नो दैट्स आवर फॉल्ट, लेकिन स्टिल गर्मी बहुत चुभने वाली गर्मी नहीं है। यहाँ की जो गर्मी है ना, ये थोड़ी आपको लग रहा होगा कि हवाएं चल रही हैं, सो इट्स नॉट कूल हेयर। यहाँ पे ये गर्म हवाएं आपको मुँह पे चपेड़े मारती है ढेर सारी, यू नो, बट नथिंग टू वरी, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ बाहर गर्मी होगी, अंदर हर जगह एयर कंडीशनड होती है, सो नॉट अ बिग डील। So now I'm entering into the House of Wisdom. It takes you back into the 9th century. आपको लेके जाएगी पास से फ्यूचर में। So she is very girl and she represents the past and she is trying to reach butterfly. So you'll come to know and why she is trying to reach butterfly. This will be. This one? Yes.
And let me tell you, the House of Wisdom is also known as the Great Library of Baghdad, right? जो कि एक एकेडमी और इंटेलेक्चुअल सेंटर रह चुका है बगदाद का ड्यूरिंग इस्लामिक गोल्डन एरा। इस एरा की सबसे प्रोमिनेंट जो शख्सियत रह चुके हैं, यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये है अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अस्सबाह अल-किंदी। अल-किंदी इज़ अ सरनेम जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हैं। One of the greatest scientist, mathematician and philosopher. Even he is known as the father of Arab philosophy. Not only that, he even invented a secret language as well. Al-Kindi learned and studied science, so he's a great philosopher, a geographer, and a scientist. And he loved to invite all other great thinkers from all around the world to his home city, that was Baghdad, the capital of Iraq. Let's have a look at this city. ये एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पे व्यू एक पूरे सिटी का ओवरऑल दिखाया हुआ है। That depicts the place where all the thinkers, philosophers, scientists and great minds connected from all around the world. Yet their amazing work was stored in the House of Wisdom where Al-Kindi lived. Let's have a look at that as well. From China, so this ones. So these books were imported from China during the time. These are imported from China, right? Yeah, it was imported from China. All right. During what time? During 9th century. All right. If you look at the details, आपको अंदाज़ा होगा कि उस टाइम मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स इन सारे सब्जेक्ट्स में जितना उनको अबूर तब हासिल था, हाउ इंटेलेक्चुअल दे वर इवन देन। यहाँ आके आपको एक रियलाइजेशन ज़रूर होती है कि आज जब हम ये सारी चीज़ें अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि जिन्होंने ये इन्वेंट की उनका क्या कैलिबर होगा। लाइक इट्स नॉट नॉर्मल। This is such a proud moment to see the work of our highly intellectual scholars. आप लिखाई से अंदाज़ा करें कि कितनी सफाई से ये सारी चीज़ें अभी तक stored हैं। This is mind blowing, trust me. Have you seen what it is? ये check करें यार, oh my god! Look at this. Okay. Here, speaking of the great minds, let me take you inside and explore more about the world's greatest travelers. Flashlight is not allowed. Flashlight is not allowed. Okay. जी हाँ, मिलिए इन 3 अजीम लोगों से जिन्होंने दुनिया में दूर दराज इलाकों का सफ़र करके दुनिया की किस्मत बदल दी। Over here, it's a barely for 57-meter long wall, and it shows the evolution of mankind. Meet Al-Bakri. He's from Spain, one of the giants who really helped advance the progress of human movement. He's called a traveler, but असल में ये कहीं नहीं गए. But he met lots of people who traveled all over the world, and he was so amazed by their stories and facts that he wrote it down in a book. Not only that, he was famous for being the best map maker, जिसको हम नक्शा नवीस कहते हैं. Maybe we should call him a traveler of mind, because he read the minds of all those people who traveled a lot. The second greatest explorer of all time is Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta. So Ibn Battuta was born in Morocco. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 30 साल जो हैं वो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया ट्रैवल किया, पैदल चल के बाय सी, और कुछ जो है वो ऊंट पर किया.
And then he got involved in diplomacy and politics in India and China, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे dangerous adventures किए. इनकी किताब रिहला जो है वो काफ़ी मशहूर है. इनके सफ़र की जितनी मालूमात, जितने किस्से और जितनी ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और जोग्राफी और पॉलिटिक्स के हवाले से जितना उन्होंने लिखा है उसमें, दैट केम वेरी पॉपुलर. अच्छा, जिन चीज़ों का इन्होंने मुशाहिदा किया, लाइक द थिंग्स दैट ही एक्सप्लोर्ड वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. So that is how he played a greater role in the mobility. The third greatest explorer of the world, Ahmad ibn Majid, he's also called the Lion of the Sea. He was born in UAE, Julfar, and he sailed all over the Indian Ocean and became a master of navigation by the stars and using seasonal currents. इनकी एक बहुत मशहूर बुक है जो कि जिसमें स्टार पोजीशंस, विंड्स एंड पोर्ट लोकेशंस और साथ ही रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं फॉर नेविगेशन, राइट? एंड दैट्स वेरी यूजफुल. अच्छा, सरप्राइजिंगली दैट इज़ एक्यूरेट इवन बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स. और उन्होंने काफ़ी अरब सेलर्स को अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचने में मदद की. लाइक ही वाज अ मास्टर ऑफ सेलिंग. हाँ बिल्कुल सही. I'm sure that knowledge of the world will become greater than what we were. The world has changed. Not So here we have Ahmad. He is a pearl diver. So back in 1920 to 1970s, pearl diving was their source of income. All right. The equipments that you see on him, back in those days, these were used by people so that it will protect them from the dangers of the sea. And as you see, he's pointing out the pearl of the sea. And this pearl shows you the time of 1920 to 1970s. It shows you how the Dubai Creek was developing and growing and expanding. It's showing you the process of growth. All right. इस एक्सपो में दुबई ने अपनी लास्ट 50 years का जर्नी और स्ट्रगल शेयर की. द ड्रीम दे सॉ 50 years ago and how they made it possible, and that it was based on mutual respect and tolerance among all the countries around. तो जो प्रोग्रेस दुबई ने अभी तक की है वो तो हर किसी के सामने विजिबल है, राइट? बट नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो शेयर देयर नेक्स्ट 50 years प्लान. दैट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आई विल शो यू द डिटेल्स इन अ व्हाइल. अभी जब हम अंदर जाएंगे तो यू विल गेट टू सी ऑल द प्लान्स दुबई हैज़ फॉर नेक्स्ट 50 years and even next 100 years, right? The main focus was rebalancing our relation with nature, the expansion of digital world, even navigating our expansion of digital world. क्योंकि AI has got to be challenging, so they even talked about that. All the major challenges that we are facing these days, be it global warming, our ecosystem, economy. So Expo City में they created 3 districts, जो हमारी आम जुबान में जिसको ज़िला कहते हैं. एक है Sustainability District, the other is Mobility District, and the third is Opportunity District. And let me tell you here, Pakistan Pavilion came under Opportunity District. So if you want, we can firstly take a tour of Pakistan Pavilion जो कि अब closed है. It was just there till 31st March 2022. और इसके बाद ये एक्सपो नेक्स्ट 5 years बाद किसी और कंट्री में होगा. He was president for Abu Dhabi. His Highness Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, he was the ruler for Dubai. They both had the first meet in the desert called Uqub Sidera in 1968. And they bought this idea to make all 7 Emirates united. And after 3 years in 1971, the dream became true and became United Arab Emirates. He was his It's okay, no worries. He became president for United Arab Emirates and he was his voice.
All right. So here on the interactive screen, you can swipe and see some of the iconic buildings we have in the UAE. Swipe on the screen and see the. So after the development, interactive screens show you the main buildings of UAE and it seems magical, you know. बचपन की एक किड सीरीज याद आ रही है मुझे यहाँ पे, जिसमें देयर वाज अ चाइल्ड और उसके पास मैजिक पेन होता था. दैट वाज शाकालाका बूम बूम. मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल उसी मैजिक पेन वाली फीलिंग आ रही है, ट्रस्ट मी. Welcome to the globe. Yeah. Welcome to the globe. This is one of the world's largest globe. As billions of data and products are transported across the globe, we need to navigate the complex of web mobility. Technology is breaking boundaries and where will it take us next? So here we are going to see where technology is taking us next. Okay. Can also move people, whether they are tourists, workers, professionals, immigrants or refugees. सो बेसिकली हमने शुरू में देखा कि किस तरह पहले जो है वो मोबिलिटी के मीन्स डिफरेंट थे. लोगों के लिए पैदल चलना या समुद्री सफ़र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और आपस में जो नॉलेज, ट्रेड, हर चीज़ का जो एक तबादला था, एक्सचेंज था, वो कितना ज़रूरी भी था और कितना मुश्किल था. आहिस्ता आहिस्ता फीजिबिलिटी बढ़ती गई, जो जो इन्वेंशंस होती गई, जो जो मोबिलिटी के ज़रिए जो है वो बढ़ते गए. ऑल अराउंड द ग्लोब जो है चीज़ें आसान होती गई, कनेक्शंस आसान होते गए, ट्रेड आसान होती गई. सो दिस इज़ द मॉडर्न एरा जिसमें टेक्नोलॉजी इज़ देयर एंड हाउ लेटेस्ट इन्वेंशंस ईज द मोबिलिटी फैक्टर्स एंड दैट लेड टू ग्लोबल नेटवर्किंग एंड मॉडर्नाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड. So here some of the important information is displayed. It says that many people migrate to Dubai for work. In 2019, 72% of the city's permanent resident population was male, mainly due to the large number of foreign male workers. And over 200 foreign nationalities currently living in UAE are making roughly 80% of the total population. It's a big part of my work to make sure AI respects our brains and protects our well-being as it continues to improve our quality of life. 7.5 billion others to create harmony between people and planet. Okay, so this is my favorite part of visiting Aleph Pavilion. So just count it down, I'm gonna be an astronaut in a while. Well, it's everyone's dream, I guess. Who doesn't want to go in space? 3, 2, 1, here I go. Hassan Mansouri, you might know Hassan Mansouri, right? Yeah, so that was the first UAE astronaut who went to space. He stayed there for 13 days. So this is actually in memory of him actually, Hassan Mansouri, first astronaut from UAE. Okay. And moving forward, you'll see this the first venture by UAE to another planet. Sorry, can The first venture by UAE to another planet. All right. So if you remember on 2020, UAE sent one satellite to Mars. That was in the year 2020 and reached there in 2021. All right. So what you see is an exact replica of the satellite which was sent by UAE. Okay. But the size, what you see is only 40% of the original.
All right. So the original is actually 2.5 times bigger than this one. And as we speak, this is now orbiting the Mars and taking pictures. All right. So behind is some of the images taken by the satellite of the Mars. All right. Real images from Mars. Now another person actually has gone. His name is Sam Sultan. So he's going to be there for more days actually. More than 13 days, right? Yeah. All right. So he's going to be on a longer mission there. All right. And moving forward, you will see more information about Mars. Because UAE has planned to actually send people to Mars in the next 100 years. All right. That's why we are having all this satellite launching and programs. Okay. So have you displayed the people who are going there, or it's Not really, because we have so much time left, right? It's All right. more than 100 years. All right. Yeah. Thank you. अच्छा, यहाँ पे ये जो मॉकअप है ये मिनिएचर सेटअप है यूएई की स्पेस एजेंसी का। ये वो सारी पूरी टीम है जिसने मार्स मिशन पे काम किया है। सो इट इज़ लाइक गिविंग अ ट्रिब्यूट टू दैट टीम। टू बी ऑनेस्ट आई लव दिस पार्ट। ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। मार्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी डिस्कवरीज हैं, वो सब यहाँ पे दे आर लाइक मेंशन टू एजुकेट द पीपल हु कम हेयर एज विजिटर्स, just like me, who never took interest in the Mars mission. But yes, now I'm very overwhelmed and pretty interested, क्योंकि I think पाकिस्तान को भी इसमें पार्ट प्ले करना चाहिए। As we all know कि planet Earth पे जितने resources हैं वो scarcity की तरफ जा रहे हैं, so we must have an escape plan. So it's at a distance of 227.9 million kilometers from the sun, and its average temperature is minus 60 degrees Celsius. Okay, according to the information displayed here, Mars पे 2 moons हैं, like 2 चांद हैं. One is called Phobos and the second is called Deimos. That is irregular in shape. It means कि वो चांद जो हैं वो गोल नहीं हैं. They're not round, they're irregular in shape, which is not digestible for us क्योंकि हम तो चांद को हमेशा गोल ही देखते आए हैं. So I think Mars will have other things different as well. अच्छा, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर की तरफ से जो होप प्रोब मिशन जो यूएई ने सेंड किया है, वहाँ पे वो लोग अपनी बैटरीज कैसे चार्ज करेंगे। इट्स अ फैक्ट रिटन हेयर कि वो अपनी बैटरीज चार्ज करेगा सोलर पैनल्स के थ्रू। मींस वो अपने सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ उसकी डायरेक्शन रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग ले सके डायरेक्टली फ्रॉम द सन। और जो अर्थ से कम्युनिकेशन के लिए हाई गेन एंटीना यूज होगा, दैट विल प्रोड्यूस अ नैरो रेडियो वेव बीम जो कि डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंटेड होगी, बट फॉर अ फैक्ट दैट विल टेक अराउंड 13 to 20 minutes टू रीच टू द अर्थ। सो दरमियान में जो एक लैप होगा वो अराउंड 20 मिनट्स का होगा इन द कम्युनिकेशन। नॉट ओनली दैट, मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये भी था टू नो दैट मार्स इज जस्ट 15% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम। लाइक अगर हम अर्थ को क्रैक करके अंदर से खोलें like an eggshell, so अर्थ प्लैनेट के अंदर जो है वो 6.5 जो है मार्स के प्लैनेट्स अंदर आ सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर वॉल्यूम। हम डेंसिटी की तो बात अभी नहीं करें क्योंकि डेंसिटी में इससे भी ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में दे हैव शोन कि मार्स प्लैनेट से अर्थ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह होगी। सो शी इज़ अ मदर एंड शी इज़ टॉकिंग टू हर किड्स। हियर इज़ अ डेमो। Hey kids, hello from Mars. What are you doing today? Today I'm doing something that you really like to do. Oh, come on, give us a clue. Today's experiment is about to Mars' ability to pollinate on Mars. And Mars system is found in a little box. Wildflies! Are you chasing wildflies today? Don't
It will take some time to complete all of this. Naomi, but when will we be going to the real Mars? I won't go, but you know, the first journey will be in 2017, about 100 years from now. Travel to Mars is for future generations like you. Yeah! I'll start getting ready for now. Me too. Of course, if you keep up with the good work. Speaking of, do you have something to show me? Well, me, Saeed and I are working on a secret project that you love. But we don't want to tell you about it yet. Is that the AI competition that you love? Please tell me more. It is a surprise for me. Let us finish it first. Oh, come on, just a little hint. Well, to me, we can't hear you. Sorry. I think there's something wrong with our ground system. Yeah, I guess you have to wait. Okay, I'll wait. But show it to me soon, please. Bye-bye, guys. Love you. Bye. And don't worry. We are sure that you're going to love it. Yeah. Bye-bye. Assalamu alaikum, Ummi. Hey kids, hello from Mars. What are you doing today, Ummi? Today we're doing something really interesting. ये क्या है? फूड पांडा वाला किधर जा रहा है? फ्यूचर में जा रहे हैं काफ़ी 100 साल बाद मतलब जा रहे हैं क्या होगा यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर के मतलब फ्यूचर की सिटी में क्या होगा So as mentioned here, they have shown the city of future that will be designed for us and by us so that we can choose our own future, which will be developed with livability, sustainability and well-being in mind. So basically it is a vision for city of future created by the children participated in a global competition. Let's have a look. Congratulations. It is now in the top 3%. I'm gonna go back to nature again. More trees? Not just that, but what if the city starts to learn? Reset commencing. Last saved version loading. Okay, first, let's move on transportation. For example, we also need sunlight and places where people and things can grow. You're right. Works. The city looks alive. It is alive. How about that for harmony? Hakim, what's our score now? Congratulations. Your city design is now in the top 3% of the world. Something about our happiness score. Maybe harmony? Harmony? To its citizens and their physical environment. What do you mean? It looks at how well people's practical city. Avatars successfully deployed. Okay, watch this. I think it can work. Nature. Let's get back to our roots. Oh man, that's amazing. I know, right? We let the city moves and changes for people. Nice. That's not what I meant. Right. How about we go back to nature again? More trees? Not just that, but what if the city starts to learn? For example, we also need sunlight and places where people and things can grow. You're right. Works. The city looks alive. It is alive. How about that for harmony? Hakim, what's our score now?
Congratulations! Your city design is now in the top 3% of the world. Congratulations! She is the same girl, ना? Okay, जहाँ से हमने start किया था. So yeah. So it was really interesting. The whole show was inside this elevator. ये elevator हमें top पे ले गया था pavilion के, जहाँ पे हमने future city देखा अभी, right? So we just got to know the 1,000-year journey of transportation from 9th century to the present and the future next 100 years plan. उसकी सारी लाइक हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ है ये देखिए वाओ सो दैट्स हाउ दे एक्चुअली क्रिएटेड इट टीम की पिक्चर्स हैं सो ये सारी वो टीम है ये वो वाली ये पहले उन्होंने आर्ट जो बनाया है ये वो है and that's how they illustrated it separately, right? Can you see? Oh my God, look at the details. Listen, I know how low I can go. I give as good as As I told you earlier कि हम थोड़ा सा late हो गए थे. We reached here around 4:30 and now it's 6, so they had to close it. इसलिए वो हमें कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं. It's over now. Okay, now I really need coffee, so let's see. This is Alif Cafe, right? या तो हम यहाँ से कुछ लेते हैं या फिर बाहर से कुछ ले लेते हैं. Mama, we are done. We are done. कोकोनट मैंगो चिया पुडिंग कर लेते हैं ठीक है ना चीज़ वी आर नॉट श्योर कहीं और से ले लेते हैं जहाँ का पता हो सो फाइनली एसी से बाहर निकलते वही गर्म हवाएं हैं मरीना मॉल चले ठीक है और बहुत शदीद गर्मी है So I've decided कि हम यहाँ से जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज करने वाले हैं. That's going to be a 50 dirham challenge. उसके लिए हमें जाना है मरीना मॉल. So let's go. Where can I find the buggy to go to the main door? Well, let's see where that's sitting. गर्मी इतनी शदीद है कि आई रिग्रेट मैंने अपने बाल क्यों खुले छोड़ दिए. खैर आई एम थिंकिंग टू टाई देम अप. हियर आई जस्ट मेड अ बन एंड गॉड आई फील सो रिलैक्स्ड. I just love this ancient style water refilling station. Pretty cool. एक बात और बताती चलूँ, ये जो अल वसल डोम है, it has the same kind of significance जैसे आईफिल टावर इसी तरह एक वर्ल्ड फेयर के लिए काफ़ी सालों की मेहनत से बनाया गया था and it is a monument till date. So अल वसल प्लाजा is having the same kind of significance. और इस सिटी को ये थोड़ा और एक्सपैंड करके एक बिजनेस हब और इनोवेशन सेंटर भी बना देंगे आई एम श्योर सो दैट दिस सिटी कैन फॉलो द लेगेसी ऑफ द पर्पस एंड पावर इट गेव टू द वर्ल्ड.
So that was all for today. Stay connected for this amazing 50 dirham challenge that I'm gonna show in the next vlog. Don't forget to subscribe my channel so that next video's notification can reach you directly.